Hey, hi. Hope you have given super mock and welcome to the video solutions of the con section. And I'm going to discuss various approaches for many questions, and there might be some approaches which you might not have even thought of, right? So ensure each and every question has been analyzed by you, and you'll take a lot of things to learn from this book, right? On that note, let's start with our first question. Yeah, here it is. This question is actually saying that there are some digits like 1, 3, 4, 5, 7, 9, and repetition is possible. And how many numbers less than 1000 that can be formed that are divisible by 12? So we need to find out 12 का multiples, right? So 1000 से कम होने वाले numbers में 1000 में कम होने वाले numbers में you have a single digit number, you have a double digit number, and a triple digit number, right? इनमें से कोई भी नंबर हमको हर टाइप ऑफ नंबर को चेक करना पड़ता है. बट व्हाट इज द डिविजिबल टूल ऑफ 12? वेन एवर यू हैव ए नंबर जिसका डिविजिबल चेक कर रहे हैं, उसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मोर देन वन है, मतलब 12 का प्राइम फैक्टर्स मोर देन वन है, टू भी है, थ्री भी है. सो वी नीड टू प्राइम फैक्टराइज दिस. सो व्हाट डू आई गेट? टू सिक्स जा, टू थ्री जा, थ्री वन जा, 12 is nothing but 2 square into 3. मतलब I should be known that my number has to be divisible by, sorry, 2 cube, right? 2 square. My number has to be divisible by 4 also and 3 also, right? We should have known that 4 ka divisibility rule is last two digits should be divisible by 4, and 3 ka divisibility rule is sum of the digits should be divisible by 3. So if last two digits have to be divisible by 4, I mean, if this has to be divisible by 12, my number has to be even number, and there is only one even number, one even digit given here. सो इफ आई जस्ट एंड अप हैविंग ओनली 4 ईयर, मतलब इतना तो पता हो गया कि मेरा नंबर इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि 12 से डिविजिबल है. 4 से डिविजिबल होना है तो इवन नंबर होना चाहिए. बट सिंगल डिजिट 4 ही रख सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं रख सकता हूँ. बट 4 12 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ कोई केस ही नहीं मिलेगा. यहाँ लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल, राइट? सो सपोज मैं यहाँ 4 रख दू, स्टार्टिंग में 1 4 रख दू, 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट? 4 रख के 3 रख दू, नहीं है. 4 रख के 4 रख दू, 4 से डिविजिबल है, राइट? 4 से डिविजिबल तो हो गया अब, बिकॉज रिपीटेशन इज पॉसिबल. बट इज इट डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो? 3 के लिए क्या होना चाहिए? डिजिट सम शुड बी डिविजिबल बाई 3. डिजिट सम इज 8. इज इट डिविजिबल बाई 3? नो, दिस इज ओनली डिविजिबल बाई 4. देयरफॉर ए भी गया. 4 रखा, 54. 54 क्या है? 3 से डिविजिबल है, क्योंकि डिजिट सम इज 9, बट 4 से नहीं है, तो ये भी गया. लास्ट वी हैव टू पुट 74. ये नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी, 3 से भी. 4 रख के 9 रख लो, 13 हो जाएगा. तो ये भी डिविजिबल नहीं, मतलब दो डिजिट में भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा. नाउ इफ आई पुट 4 हियर इन द थ्री डिजिट नंबर, द बट वन डिजिट should be, I mean, it should be such that so that it is divisible by 4. We saw that even in last two digits, I mean, last case, there is only one possibility जहां number 4 से divisible हो. Last two digits ending, or last digit is ending in 4. There is only one possibility which is 44. 1 3 5 7 9 कोई भी रख लो, 4 से divisible नहीं है. Now two digits, last two digit 4 से divisible तो है. Now what should I keep here so that it is divisible by 3 also, right? Suppose I say this is x. Now x plus 8 should be divisible by x plus 4 plus 4. X plus 4 plus 4, which is x plus 8, should be divisible by 3, right? So मेरे पास ऑप्शंस क्या है? 1 plus 8, which is 9, चलेगा.
3 plus 8 which is 11, not divisible. वापस 4 plus 8 which is 12 चलेगा. वापस 5 plus 8 which is 13 नहीं चलेगा. 7 plus 8 which is 15 चलेगा. 9 plus 8 17 नहीं चलेगा. 3 से डिविजिबल नहीं है. राइट. लास्ट 4 रखने की वजह से 4 का डिविजिबिलिटी चेक कर लिया. अब डिजिट सम के थ्रू 3 का डिविजिबिलिटी चेक किया. आई गॉट ओनली 3 such possibilities where first digit is 1, last 2 digits are 44, first digit is 4 and last 2 digits are 44, and first digit is 7, last 2 digits are 44. These are the only 3 cases possible, so the answer is 3. ठीक है. If you are good at divisibility rules, making cases, this should not have been very tough question. Yeah, it will be between level 2 and level 3. Yes. Coming to this question, the moment you can draw a regular pyramid and you can visualize it, this question becomes super easier, right? See, he's saying there is a pyramid of square in shape base. So, pehle, if I draw the base, and there is a center here through which I have height. So, यहाँ से यहाँ तक सारे triangle bases है, right? This is how my pyramid is. What exactly is being said to me? The height of this is thrice of the side. Now, what is the ratio of the area of one of the triangular faces? So, in this triangular face, if I talk about, if I extend a line like this, and if I extend a line like this from line segment on the triangle face, right? So, for this triangle, let me say A, B, C, this line will become H. And for this triangle, which is right angle inside the pyramid, the height is 3x. A वाला part जो भी है, वो exactly half of the side of the square हो जाता है. ठीक है. If you could visualize this question becomes easier, because in this question they are asking what? Ratio of the area of one of the triangular faces to the area of the square shaped region. मतलब triangle divided by square. Triangle में क्या है? Half into base क्या है? BC. BC is x because it's full square का side. And height क्या है? I don't know. That is what I'm expected to find out. And area of the square will become x square. So x to cancel. I'm supposed to find out h by 2x. Now, how do I find the height? Suppose I take this as A, I take this as E. AOE is a right triangle, right? This is 3x, this is x by 2, and this is h. I know that h square is equal to 3x whole square plus x by 2 whole square. So h square is equal to 9x square plus x square by 4, which implies h square is equal to 37x square by 4. After simplifying, h would become square root of 37 by 2 into x. Under root apply करने से square गया, under root गया. So let me substitute that here. h की जगह root 37 by 2 into x by h by 2. एक second. x, yeah. ये h है, मुझे यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करना है. h मैंने रख लिया, यहाँ 2x. So x कैंसिल, your answer would be root 37 by
4. But I do not have any option saying root 37 by 4. So my answer should be none of this. Okay, just you should be able to see that right triangle within this from which is AOE, and also if you can find out the hypotenuse, this is not a tough question. So you can put this between L2 and L3. Yeah. Coming to this, see, we are known that three terms are in AP. So we need to know one thing. If log A base x, log B base x, log C base x, if they are in AP, if they are in AP, it means A, comma B, comma C are in GP. Right? This is a standard rule that I would want you to remember. It actually comes with the property of arithmetic progression. Arithmetic progression में क्या होता है? This minus this equal to this minus this. When I do that, log B base x minus log A base x, I'll get log B by A base x is equal to log C base x minus log B base x will become log C by B base x. Because bases are same, I can say B by A is equal to C by B. So B square is equal to AC, which is coming with the thought process of GP. So here I have three terms. I want to bring all the three terms with the same base. ताकि आर्ग्यूमेंट्स को मैं जीपी अप्लाई कर सकूं, ये वाला कंडीशन अप्लाई कर सकूं, तब एक्स आराम से मिल जाएगा. वन मोर थिंग, whenever you have this kind of questions, base में constant and power में variable, you assume 2 power x as a. It reduces your efforts. Yeah. So now our step is make sure the bases are same. So यहाँ 2 है base, यहाँ 4 है base, यहाँ कुछ नहीं है. Right? So let me try to bring everything into 2. So 1 की जगह I'll write log 2 base 2, and 4 है, 4 को 2 square लिख ले, 2 power 1 minus को 2 power 1 by 2 power x लिख ले, and comma log base 2 6a minus 1, है ना? This is what I have. Now the thing is, I want to have only base 2. So इस 2 को जंप मारवा दूंगा तो यहाँ तक जाएगा, and वापस इसको रिवर्स जंप मारवा दूंगा तो यहाँ तक जाके यहाँ जाएगा. Right? I have log 2 base 2, log base 2, 2 by 2 power x plus 3 whole power 1 by 2, log base 2 6a minus 1. So what would I do now? I have a, b and c. So we'll do b square is equal to ac. p की जगह 2. Okay. What did we decide? Just we'll write 2 power x as a, right? To make our job easier. Yeah. So b square is 2 by a plus 3 whole power 1 by 2 whole square is equal to 2 into 6a minus. a की जगह 2 है, c की जगह 6a minus 1. तो यहाँ तो ये दोनों कैंसिल. इंडाइसेस फॉर्मूला a power m whole power n is a power m into n. यहाँ भी वही यूज किया, a power m minus 1 n is a power m by a power n. अब क्या? 2 plus 3a by a is equal to 12a minus 2. So which would be 2 plus 3a is equal to 12a square minus 2a. And then you have 12a square minus 5a minus 2 is equal to 0. Now this quadratic equation has to be factorized, right? I have minus 5a here. 12 into minus 2 is minus 24. So I would write this as 12a square minus 8a plus 3a minus 2 is equal to 0. I'll take 4a common here. It will become 3a minus 2 in plus 1 common here.
3a minus 2 is equal to 0. अब क्या, 3a minus 2 into 4a plus 1 is equal to 0. So I would get a is equal to 2 by 3 r minus 1 by 4. So these are the two solutions I got. a हमने assume क्या किया, 2 power x. So 2 power x equal to 2 by 3r minus 1 by 4. Because constant power x can never be negative. Constant power x can never be negative. Because 2 की पावर में कुछ भी रखो नेगेटिव नहीं होगा. 2 power x has to be 2 by 3. So I need to find out x. So what would I do now? दोनों तरफ log अप्लाई कर लो. दोनों तरफ log अप्लाई कर लो. What do I get? Log 2 power x equal to बेस 2 में अप्लाई कर लेते हैं. Log 2 by 3 बेस 2. So यहाँ x जंप मारेगा. X log 2 base 2 which will be 1. Log 2 by 3 is log 2 base 2 minus log 2 base 3. So which will be 1 minus, sorry, log 3 base 2. Log base 2 minus log 3 base 2. Log m by n is log m minus log n. So which will turn out to be 1 minus log 3 base 2. Okay, option D will be the answer. Right, a quadratic equation and log ka properties and little bit of indices properties. This is a mixed. Hope this is clear. And yeah, this would also go between level 2 and level 3. Yeah. Look at this question. He's saying this is a vegetable vendor. He has a total of 312 kg vegetables, right? And there are 4 types of vegetables. This question is actual replica of cat question. So let me say I have potatoes with me, onions with me, tomatoes with me, carrots with me. Totally 312 kg vegetable. Now he is saying the ratio of quantities of potatoes to onions is 4:3. So potatoes को मैं 4x लूँ, इनको 3x लूँ. ठीक है. And the quantity of tomatoes equals the quantity of onions. मतलब tomatoes भी onions की जितना ही है तो 3x ले लेते हैं. Now remaining are carrots. I don't know how many carrots are there. But he says vendor sells 51 kg potatoes, 24 kg onions, 30 kg tomatoes, and half the quantity of carrots. So because of half, and I don't know how many carrots are there, we have to assume the variables intelligently. Right? Carrots jitne bhi the half big गए. So I take this as a multiple of 2. I cannot take this also as 2x because they have not given me the relationship between tomato and carrots. Rather, I can take this as y. ठीक है. अब सोल्ड में क्या आ जाता है? सोल्ड में क्या आ जाता है? पोटैटोस को 51 kg सोल्ड किया, ऑनियंस को 24 kg सोल्ड किया, एंड यहाँ 30 kg, एंड यहाँ हाफ द क्वांटिटी y सोल्ड किया. राइट. नाउ I can clearly see that in sub case sum should become 3112 kg because that is given. It implies sum of that should become 312, means I get my first equation, which is 10x plus 12y is equal to 312. 10x plus r यहाँ लिख लेते हैं. 10x plus 2y is equal to 312. And how about the what is he saying उसके बाद? After this, the ratio of quantities of unsold potatoes. 4x potatoes में से 51 sold हो गए. So unsold potatoes would be 4x minus 51, right? 4x minus 51. We write it here. So ये बन गया पूरा मिलके
10x plus 2y is equal to 312. अब अनसोल्ड यहाँ लिख लेते हैं. This unsolved will become 4x minus 51. इसका unsolved has become 3x minus 24. इसका 3x minus 30. इसका 2y minus 5, which is y. Now what have I been given? The ratio of unsold potatoes to unsold carrots. Unsold potatoes is this, and unsold carrot is this. So 4x minus 51 by y is equal to 5 by 4. So what do I get? 16x minus 204 is equal to 5y. So 16x minus 5y is equal to 204. So this is what I would get. Right? 16x minus 5y. So दो इक्वेशंस आया, दो वेरिएबल्स आया. अब कुछ भी चाहिए पहचान सकते हैं, राइट? व्हाट इज आस्किंग व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड वेजिटेबल्स. अनसोल्ड वेजिटेबल्स में क्या है? इन सबका समेशन. टेक्निकली 4x plus 3x plus 10x. So 3x is 10x plus y minus 51 and 54, 106, right? So इसका वैल्यू पहचानना है मुझे, right? And me knowing that 10x plus 2y is 312 and 16x plus 5y minus 5y is 204. तो इसके बाद ऐसा थॉट प्रोसेस आ सकता है, x भी निकालू, y भी निकालू, and then I will put that value of x and y in this expression to get my answer. But I can clearly see that 10x plus 2y and 10x plus y, they are almost same. So as I am expected to find out 10x plus y, I will write here 10x plus y is equal to 312 minus y. एक y को उस तरफ भेजा, राइट? सो ये हो जाएगा 312 minus y minus 106, राइट? 312 minus 5 106. सो टेक्निकली मेरा आंसर हो जाएगा अभी 206 minus 5. दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड आउट. मतलब सिर्फ y पहचान लिया तो आई एम सॉर्टेड, राइट? y पहचान लिया तो आई एम सॉर्टेड, मतलब जिसके लिए मैं x को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ 10x है, यहाँ 16x है. What do I need to do? I need to make the coefficient of x same. So I'll multiply this by 5, taking the LCM of 10 and 16, which is 80x minus 25y is equal to 5, 1020. Now similarly इसको मैं क्या करें, 8 चाहिए मुझे, इंटू 8 कर लेते हैं. तो 80x plus 16y is equal to 2496, right? Now if I subtract, एक कट जाएगा, minus 41y is equal to 2496 में 1020 गया, 2496 में, just a second, yeah, 2496 में 1020 गया, 6 है, 7 है, 4 है, 1 है, 1476 minus 1476, minus minus cancel. So if I do 1476 by 41, how much would I get? Let's use calculator. This is the place we can go for calculator. 1476 by 41. 36 is what I'm getting. So I'll get 36. यहाँ 50, ये 105 है, सॉरी. So ये 105 है तो 207 minus by 207 minus 36 would become 171. And this would be my answer, right? You need to be very careful in this kind of questions to keep your calculations intact. This would definitely go into L3 because of lengthy calculations. But if you do not have any other question that you can do, you can rely on this.
Coming to this question, this is one of the question that gives you relief in this paper. ठीक है. So 9 power 12 I am dividing by 1000 and I need to find out the remainder, right? So हमारे थॉट प्रोसेस ये हो सकता है, पहले क्वोशंट से जाए, राइट? सो लेट मी डू दैट. 1000 का वैल्यू क्या है? 2 into 5 का होल क्यूब, राइट? 10,000. I am parameterizing this. This would become 2 cube into 5 cube. So when I am trying to find out the quotient, 5 of 1000, मतलब क्वोशंट के थ्रू मुझे वो नंबर आएगा जिसकी पावर रखने की वजह से रिमाइंडर 1 होगा. एंड 9 and 1000 बोथ आर को प्राइम, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, तो क्वोशंट अप्लाई कर सकता हूँ. सो 1000 इंटू नीचे 2, बिकॉज प्राइम फैक्टर्स आर 2, नीचे 5, प्राइम फैक्टर इज 5, ऊपर एक नंबर कम, ऊपर एक नंबर कम. इफ आई सिंप्लीफाई दिस आई गेट 400. मतलब 9 की पावर में 400 होता, रिमाइंडर 1 आता, बट 12 है, बहुत छोटा है, मतलब क्वोशंट को कोई लेना देना नहीं है. बट you need to know one thing. 9 power 12 is basically 9 power 4 into 9 power 4 into 9 power 4 लिख सकता हूं मैं. सिंपली बेसिक रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं. ये 9 पावर 4 कितना होता है? 6561, 6561, 6561. नहीं पता होता कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. नाउ अप्लाई द बेसिक रिमाइंडर थ्योरम. 6561 कितना देता है रिमाइंडर? आई विल गेट 561, 561, 561 by 1000. Now what? 561 into 561 into 561, right? If you look in the calculator, this would become 176,558,481 divided by 1000. And 1000 में I could see that only the last 3 digit will be the remainder, है ना? तो यहाँ भी last 3 digit which is 481 should become your remainder. ठीक है. सो इससे ज्यादा सिंपल रिमाइंडर्स में मे नॉट एक्सपेक्ट. आई मीन आपको ये स्ट्राइक भी नहीं हो रहा है 9 पावर 4 लिखने का. आई वुड से रादर 9 पावर 12 का ही वैल्यू आप चेक कर लो कैलकुलेटर में, और जो भी आता है उससे आपकी आंसर मिलना चाहिए, लास्ट 3 डिजिट्स. So this was an L1 question. Yep. Coming to this question, it's a composite function based question. I mean, it's not tough if you could create the equation well. So मुझे क्या दिया गया है? f of x is equal to 9. f of x दिया गया है x square minus 4x plus 4. And if you observe this equation, this is basically x square minus 2 into x into 2 plus 2 square, which is actually a square minus 2ab plus b square फॉर्म में है. तो x minus 2 का होल स्क्वायर फॉर्म में है. The moment you keep it in this format, it becomes little more easier. What do I have? f of x is equal to 9, है ना? So I have two things here. One, f of x is equal to x minus 2 whole square. And another thing what he has given to me, f of x is equal to 9, है ना? So we'll keep that f of x equal to 9. But f of x चाहिए मुझे. मतलब क्या? मुझे क्या पता है? f of x, I mean, जब भी ऐसे कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं, आप अंदर से आना चाहिए बाहर. So अंदर में f of x है. f of x का वैल्यू ऑलरेडी पता है. So what would I write here? x minus 2 whole square, right? इस f of x की जगह मैंने f of x का वैल्यू रख दिया. Now is the interesting part. f of x is equal to this much.
अब x की जगह क्या हो गया, x की जगह इतना बड़ा एक्सप्रेशन हो गया, मतलब आई कैन राइट एफ ऑफ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एक्स की जगह एक्स माइनस टू होल स्क्वायर रख लेते हैं, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर, बस यू शुड बी एबल टू राइट दिस मच, यू आर सॉर्टेड, राइट। एक्स टू आई मीन एक्स थ्री हो तो थ्री माइनस टू होल स्क्वायर होता, बट एक्स थ्री की जगह एक्स माइनस टू होल स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स माइनस टू होल स्क्वायर रखना पड़ेगा, थ्री हो तो थ्री रखते हैं, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर होता है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर रखते हैं, बस उतना ही है। अब क्या, इतना तो लिख पाए। एंड व्हाट इज द गिवन वैल्यू ऑफ दिस एज 9, 9 is equal to x minus 2 whole square minus 2 whole square, right? 0 is equal to x minus 2 whole square minus 2 whole square minus 9, right? I can write this as x minus 2 whole square minus 2 whole square minus 3 square. So a square minus b square फॉर्मेट में है, a की जगह ये पूरा है, b की जगह 3 है, तो I can write this as a plus b into a minus b, right? 0 is equal to a की जगह x minus 2 whole square minus 2 minus 3 a minus b, x minus 2 whole square minus 2 plus 3 a minus b a plus b. Now what? We are trying to get quadratic equations to find the roots at the end of the day so that I can find the sum of the real roots. X minus 2 whole square minus 5 into x minus 2 whole square plus 1, right? So when will the product of two things be 0? One of them has to be 0 at least. So I can clearly say x minus 2 whole square minus 5 is equal to 0, or x minus 2 whole square plus 1 is equal to 0. इससे क्या मिलता है, x minus 2 whole square is equal to 5, or x minus 2 whole square is equal to minus 1. Now I am looking for real roots, right? स्क्वायर ऑफ समथिंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब यहाँ जो भी रूट्स मिलेंगे वो रियल रूट्स नहीं होगा. हियर आई डोंट गेट रियल रूट्स, रादर आई वुड से आई गेट इमेजिनरी रूट्स. सो मैं इसको इग्नोर कर लेता हूँ. यहाँ स्क्वायर ऑफ समथिंग पॉजिटिव हो सकता है. सो व्हेन विल आई से x minus 2 whole square is equal to 5, then x minus 2 can be plus or minus root 5. So x would become 2 plus or minus root 5, बिकॉज स्क्वायर में हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होना चाहिए, राइट? नाउ आई कैन राइट दिस एज either 2 plus root 5 or 2 minus root 5. These are the only two real roots that this f of x is equal to 9 has. Sum चाहिए उसका, तो plus root 5 minus root 5 cancel, sum will be 4. Hope this is clear. So this would definitely get into L3 because composite function quadratic equation सब है. Yep. Coming to this question, pure percentage ratio based questions. This question will become easier if only you assume the variables intelligently. ठीक है, you can see that इसमें 3 साल का बात हो रहा है, 2020, 2021, 2022, and every year 12.5% of the forest area becomes land, है ना? 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, मतलब फॉरेस्ट एरिया को 2 बार 1/8 से मल्टीप्लाई होने वाला है, राइट? क्योंकि 2020 to 21 और 2021 to 2022. सो फॉरेस्ट एरिया का जो भी वैल्यू आप अज्यूम करोगे दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8 टू मेक योर जॉब इजियर. ठीक है, एंड ऑल्सो परसेंटेज में बात हो रहा है, विल ऑल्सो टेक हंड्रेड्स इन द वेरिएबल्स. सो कौन सा टाइप्स ऑफ एरियाज है, मतलब 2020 का बात करूं
एक तो वाटर बॉडीज है, एक तो फॉरेस्ट एरिया है, एक तो लैंड एरिया है। रेशियो दिया है 1:2:2 2020 में। बिकॉज आई वॉन्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स एंड एट्स, आई मल्टीप्लाई एवरीथिंग विथ 100। सो 1:2:2 को 2:2 को मैं 800x से मल्टीप्लाई करूं, तब क्या होगा? वाटर बॉडीज का 800x होगा, और फॉरेस्ट एरिया का 1600x होगा, एंड लैंड एरिया का भी 1600x होगा। वन थिंग यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, इन दिस क्वेश्चन देर इज नो वैल्यू एट ऑल, इट्स ओनली कंपैरिजन। ठीक है, इफ यू वांट, even if you ignore this x, it doesn't matter, because as long as there is no value in its comparison, you can assume the numbers in any way you want to make your job easier. I have assumed it in this way. ठीक है, so if these are the values, अब क्या 2021 में क्या हो रहा है? He is saying every year 1/8 of the forest area becomes land. इसमें 1/8, इसमें 1/8 is मतलब 12.5%, 1/8 is 200. We all should know that 12.5% is 1/8. 1/8 इज 200, सो ये हो जाएगा 1400। वो 200 जाके इसके साथ जुड़ जाएगा लैंड एरिया में, तो ये हो जाएगा 1800। और भी क्या हो रहा है? एंड आफ्टर दैट m% ऑफ द वाटर बॉडी बिकम्स फॉरेस्ट। m% ऑफ वाटर बॉडी, m% ऑफ 800 विच इज 8m। सो दिस बिकम्स वाटर, दिस बिकम्स फॉरेस्ट। मतलब ये हो जाएगा 800 माइनस 8m, ये 1400 plus 4m. That's what it is in 2021. Now, what is he saying? I need to find out the value of m if the ratio of the water body area in 2021 the land area in 2022. Ratio of the water body in 2021 and the land area in 2022. Water body in 2021 कितना है? 800 minus 8m to the land area in 2022. So 2022 में क्या हो रहा है? लैंड एरिया जो भी है वो चाहिए। सो हर साल क्या होता है? 1/8 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया वुड बिकम लैंड एरिया। तो 1/8 ऑफ 1400 प्लस 4m कितना होता है? सॉरी, ये 4m होगा या 8m होगा? 8m गया तो 8m होगा ना, 8m गया तो 8m ऐड होगा। सो यह भी 8m, सो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 6 आएगा, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40 प्लस m। मतलब इसमें से 175 प्लस m जाके लैंड एरिया को ऐड होगा। 1800 प्लस 175 प्लस m, so which would turn out to be 975 प्लस m, and इसका रेशियो दिया है 3/10। You should be in a position to be able to write this. Now you are sorted. Cross multiply कर लो। 8000 minus 80m is equal to 1000 into 3, 3000 हो जाता। ये क्या होगा? 2925 प्लस 3m, सो यहाँ 83m हो जाता है। ये क्या हो जाता है? 8000 में से 2925 गया, we will get 5075, right? 5075 by 83 is what we can check in calculator. Did I do something wrong? 2975 into 3, 2925, 8000 minus 80m, 80, 1800 plus 175, तो 1975 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 1975 into 3,
So 5925, it's not 2925, it's 5925. So ये क्या हो जाएगा? 8000 minus 5925 will be 2075, right? Yeah. So now 2075 divided by 83. So I get 25 is equal to M. So intelligently, if you assume the variables, this would become easier. So this would fall into level 2 to level 3. Yeah. So this is a question uh, where factorization is being checked, and then you need to take the ratio and find an answer. There is one superb twist in this question. Very interesting question I want you to see. See, we are checking the possible pairs for x and y, right? So what have we been given? 12x square minus xy minus 6y square is equal to 0. 12 into minus 6 is 72, minus 72. I need to split the middle term such way. 12x square minus, when I'll do 9 8 the 72, right? 9xy plus 8xy minus 6y square is equal to 0. So what can I take common? I can take 3x common. So I would get 4x minus 3y. यहाँ I can take 4y common, 2y common. What do I get? 4x minus 3y is equal to 0. Right? If I take 4x minus 3y common, I would end up getting 3x plus 2y is equal to 0. So I can clearly see 4x minus 3y is equal to 0, or 3x plus 2y is equal to 0. Therefore, x by y should become either 3 by 4, or x by y should become minus 2 by 3. So these are the two things that I got. So if I consider the first case where x by y is equal to 3 by 4, if I take x and if I take y, what are the values x and y can take? x equal to 3 हो तो y 4 हो सकता है. रेशियो 3:4 होना चाहिए. So दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ इंटू 2 करने से क्या होगा? ये 6 होगा, ये 8 होगा. अब भी रेशियो 3:4 है, एंड x और y दोनों -50 to 50 के बीच में है. एंड वापस इंटू 3 करने से 9, ये 12 हो जाएगा. इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व, y बड़ा है ना, तो y मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 4 का मल्टीपल्स में. 4 2 द 8, 4 3 जा 12, आई मीन 4 into 12 48 तक जा सकता है. इन दैट केस 3 into 12 36 तक हो सकता है. बट उसके बाद 52 आ जाता है, बट इट गोज बियॉन्ड 50. सो इफ आई कंसिडर बोथ x एंड y टू बी पॉजिटिव, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज. मतलब 4 into 1 से लेके 4 into 12 तक, 3 into 1 से लेके 3 into 12 तक, देयर आर टोटली 12 सॉल्यूशंस. बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट x एंड y दोनों पॉजिटिव ही होना है. इवन इफ आई हैव -3 by -4, मतलब इन्हीं चीजों को माइनस 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 लगा दो, तब भी आई गेट द सेम आंसर. मतलब इसकी वजह से आई विल गेट 12 into 2, which is totally 24 solutions. ठीक है, टोटल आई गेट 24 solutions from one single ratio. Now how about the other ratio? X by y is equal to -2 by 3, right? तो x है, y है. अब क्या? सो पहले नेगेटिव को इग्नोर कर लो. x2 हो तो y3, सो इसको इंटू 2 कर लू. 4 है, 6 है, इसको इंटू 3 कर लो. 2 into 3 6, 3 into 3 9. इट कीप्स ऑन गोइंग. कहाँ तक जाता है? 3 into 16, which is 48. ये 2 into 16, which is 32. यहाँ तक जाता है. बट मुझे रेशियो 2:3 नहीं होना चाहिए, -2:3 होना चाहिए.
मतलब एक बार मैं इन दोनों को माइनस 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 रख दूं, राइट, इतने सारे वैल्यूज आएंगे। दूसरी वे में भी मैं -3 यहाँ, -6 यहाँ, -b रख दूं, तब भी सेम ही आ जाता है। मतलब जितने भी यहाँ वैल्यूज है मुझे उसका भी इंटू टू सोल्यूशन है, ताकि x/y -2/3 हो जाए। सो 3 1 से लेके दिस इज 3 इंटू 1, दिस इज 3 इंटू 16, मतलब 16 तक गया मैं। तो ओवरऑल आई गेट 16 इंटू 2 विच इज 32 सोल्यूशन। सो इतना करने के बाद आई, इफ at all I am saying I have total solutions as 24 plus 32, right, where x and y between -50 to 50। 24 प्लस 32 लिख के 56 लिख लिया तो मेरा आंसर गलत होगा, क्योंकि मैंने बोला ना एक ट्विस्ट है। यू क्लियरली ऑब्जर्व फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, वी शुड ऑल्सो टेक दैट आई कैन टेक x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 ऑल्सो। ठीक है, इसका 4 कम कर लिया, इसका 3 कम कर लिया, इसका 4 कम करने से 0 आता है, इसका भी 3 कम करने से 0 आता है। सो देर इज वन मोर कंडीशन दैट वी कुड हैव टेकन। ठीक है, सो टोटली देयर विल बी +1 which will be 57। So there are totally 57 solutions। ठीक है, so definitely L3 एग्जाम में स्ट्राइक भी नहीं होगा। It's okay, but you learn good concept in this। Coming to this pure AP based simple question, we have two series, and he's saying sum of the first series is greater than the sum of the next series। So sum का फॉर्मूला क्या है? Summation of n terms is basically given by n/2 into 2a plus n-1 into d। अब पहली केस में 2n टर्म्स है, तो उसका सम विल बिकम n/2, मतलब n की जगह 2n, 2a, a की जगह 1, n-1 इंटू n की जगह 2n-1, d कितना है 5-1 4। He is saying this is greater than sum of the n terms of the next step, which is n/2 into 2 into a की जगह 56 प्लस n-1 to d कितना है 58 minus 56 2। So this is what has been given। I just need to find out what is the smallest value n can take, right? So यहाँ क्या हो जाता है? 2 gets cancelled, is a positive number, so I can cancel that also। So I would get 2 into, this is 8n, 2 minus 4 is -2, greater than, ये कितना है 2n, 112 होगा ये, 112 minus 2 is 110, राइट, यहाँ तक आ पाए। अब क्या, 8n minus 2 is greater than n plus 55, 2 से डिवाइड किया, so 7n is greater than 57, right? N is greater than 57/7, so which is approximately 8s are 56, 8.1/7, which is 14 something, right? So 8.14, n has to be greater than 8.14, मतलब minimum value n can take is 9, n minimum is 9। Pretty simple, could have been done even in the exam। This is something I would say between L1 and L2। Coming to this, a simple basic installment question। So what exactly has to be done here? So there is an 8,400 sum, okay? This has to be paid in 2 equal installments। This is 0 years, this is first year, 0 year, first year and second year, right? 2 equal installments में pay कर दिया, ठीक है? To make our job easier, we'll assume the installments as 100x, 100x, right?
So here it is compounded annually. I need to find out the value of the each installment, right? ठीक है, पहले we'll do the traditional method rather than taking 100x. So let me take this as x and this as x. So the 8,400, when it comes to here, what will this become in the first year, right? It would become 8,400 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 10% है तो 1.1 से मल्टीप्लाई होगा, 10% बढ़ गया, राइट? सो अभी पैसा इतना हो गया है ना, बट मैंने कितना भरा, कितना पे किया, 8,400 इंटू 1.1 माइनस एक्स पे किया. सो विच इज एक्चुअली 840 इंटू 11 माइनस एक्स. 11 4s are 44, 11 8s are 88, 9240 माइनस एक्स. सो एक साल के बाद जितना भी है बचा है, इतना बचा है. मैं इतना भरना था और एक साल के बाद भरना हो तो, बट मैं क्या कर रहा हूँ, 2 साल के बाद भर रहा हूँ. मतलब ये वैल्यू जो भी है 9240 माइनस एक्स इफेक्टिवली इतना है, वो एक साल में कितना हो जाएगा, 9240 माइनस एक्स इंटू 1.1, बिकॉज 10% बढ़ गए, राइट? So this is the amount that I have to pay at the end of 2 years, so that मेरा पूरा इंस्टॉलमेंट ही खत्म हो जाता है. तो एंड ही इज सेइंग दैट डे आल्सो आई पेड टोटली एक्स, एंड उसकी वजह से मेरा पूरा लोन ही खत्म हो चुका है. सो व्हाट डू आई डू, 9240 इंटू 1.1 minus 1.1 x is equal to x. So this is technically 924 into 11 is equal to 2.1 x, right? So x का वैल्यू क्या हो जाता है, use the calculator, 924 into 11 divided by 2.1. So I get the value of x as 4840, and that is my answer. ऐसा आप कर सकते क्या? नहीं तो there is very simple cute method in installments. Solve this. 0 year, first year, second year. I have 8,400, right? 8,400. In this kind of questions, हमेशा you need to find out the final value of the principal. 8,400 2 साल के बाद कितना बनता है, 8,400 इंटू 1.1 का स्क्वायर, क्योंकि हर साल 10% बढ़ रहा है, तो 1 + 10/100 होल पावर 2 विल बिकम द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. इतना मल्टीप्लाई करने से फाइनल वैल्यू आएगा. बट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 100x पे कर रहा हूँ, यहाँ भी 100x पे कर रहा हूँ, ठीक है. नाउ आई विल सी इफेक्टिवली मेरा ये 100x उस दिन तक कितना हो जा रहा है. इस 100x तो उसी दिन पे कर रहा हूँ, तो उसका तो कुछ वैल्यूएशन बढ़ेगा नहीं. लेकिन जो 100x में एक साल के बाद पे किया, वो एक साल में 10% बढ़ेगा एज पर द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का 10%. सो ये बन जाएगा 110x. सो ओवरऑल मिलके कितना है, 210x. सो 210x का इफेक्टिव वैल्यू है मेरा एज पर द इंस्टॉलमेंट्स. एज पर द अमाउंट दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू. दोनों सेम होना चाहिए इंस्टॉलमेंट कॉन्सेप्ट में. प्रिंसिपल का टोटल वैल्यू और इंस्टॉलमेंट्स का टोटल वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए. अब क्या होता है, 210x is equal to 8,400 into 1.211 square. So which would become, x पहचान लिया तो 21 10s are 21 40s are, right? एक जीरो कैंसिल करते, पहले एक जीरो कैंसिल करते. x इक्वल टू 4 इंटू 1.21, 4 इंटू 1.21 नहीं, 40 इंटू 1.21. मुझे 100x चाहिए. 100x equal to 40 into 1.21 into 100, which should become 4 into 120, 40 into 121, which would become 4840. Even with calculator you could have done this faster, but yeah. So I get the same value with less work using the concept of installments. So
basic hai. I mean, if you had not known installments, you should have done this approach. If you have known the easy way of installment, you should have done this. So this would fall into L2. Yeah. Coming to this classic allegation based question. This is something you could have done. He's saying the shirts are packed in two boxes. In the first box, out of the 90 shirts, have how many shirts? Out of the 90 shirts, 30% are रेड. सो रेड का परसेंटेज का हम एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ. सो 90 शर्ट्स में 30% रेड है. एंड देयर इज सेकेंड बॉक्स, आई डोंट नो हाउ मेनी शर्ट्स आर देयर, बट उसमें 70% रेड है. एंड ओवरऑल परसेंटेज ऑफ रेड शर्ट्स कितना हो गया? ओवरऑल परसेंटेज ऑफ रेड शर्ट 40% हो गया. इनकेस आप एलिगेशन नहीं सोचा हुआ होता, you could have actually used simple percentage का formula and got an answer. जैसे कि 30% of 90 is how much? 30% of 90 plus 70% of x है ना, should be equal to overall 40%. 40% of 90 plus x. 100 cancel. 2700 plus 70x equal to 3600 plus 40x. So where I would get 30x equal to 900, which gives me x equal to 30. ये 30 आ जाता है, राइट? उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते थे, बट आई डोंट वांट यू टू डू दिस मेथड, राइट? परसेंटेज को भूल जाओ. यहाँ 90 आर्टिकल से x आर्टिकल से क्वांटिटीज पता है, इसका 30% है, इसका 70% है, और मिलने के बाद 40%. बीच वाला जब भी आपको पता है मिक्सचर का, एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो. You just draw dashes. 70 minus 40 is 30. 40 minus 30 is 10. So 90 by x has to be 30 by 10. So x would become 30. So I can see x is 30 articles. अब क्या बोल रहा है? The percentage of shirts in the second box had been 90% instead of 70. मतलब पहले 90 में तो 30% ही था, बट बाद वाले 30 में 70% की जगह 90% था. अब ओवरऑल परसेंटेज ऑफ रेड शर्ट्स, मतलब अभी ओवरऑल परसेंटेज चाहिए. बीच वाला नहीं पता है. जब भी बीच वाला नहीं पता होता है, यू नीड टू गो फॉर वेटेड एवरेज. सो रादर देन टेकिंग द होल क्वांटिटीज फॉर द वेटेड एवरेज, यू कैन टेक द रेशियो. मतलब 90:30 is 3:1, राइट? लेट मी से थ्री क्वांटिटीज में 30% है, वन क्वांटिटी में 90% है. ओवरऑल 4 क्वांटिटी में कितना है? दैट्स व्हाट इज द क्वेश्चन. सो वेटेड एवरेज के हिसाब से 3 × 30 कर ले. 3 × 30 plus 1 × 90 divided by 3 plus 1. So 3 की 1 की जगह आप 90:30 भी रख सकते थे. 90 × 30 plus 30 × 90 by 90 plus 30, you will still get the same answer, but calculation बड़ा होगा. So 30, 90 plus 90, 180. 180 by 4, answer is 45%. Right? Yeah. So this is actually between L1 and yep. This is coming to this one of the sweet questions, I would say. मेन साइड्स दिया होता तो हम एरिया पहचान सकते थे ट्राइंगल का, लेकिन हाइट दिया हुआ है, राइट? सी, we need to understand what exactly the sides of this triangle are to understand what exactly is the area of this triangle. Suppose I take the bases as A, B, C. Area will be what? Half into base into height, or
half into base into second height, half into base into third height. With respect to any height, I could have done the area. Now, what has been given? ये नहीं पता है, 60 पता है ये, और ये क्या बोल रहा है? b इंटू 48 half into c into 80, right? We have equal to equal to equal to. So I can clearly see that area is A, right? If I try to find out A is to B is to C to understand the behavior of the sites, A क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2A by 60, B क्या हो जाएगा? 2A by 48, C क्या हो जाएगा? 2A by 80. 2A तो सब में कॉमन. I can see 4 15s are, 4 12s are, 4 20s are. I can take LCM as 60, it will become 4 by 60, it will become 5 by 60, it will become 3 by 60. So it boils down to 4 is to 5 is to 3. Matlab, if one side is 4x, other side has to be 5x, the other side has to be 3x. We can come to a conclusion that the sides are a right triplet. मतलब ऐसा है मेरा साइड्स, एक 3x है, एक 4x है, एक 5x है. नाउ जब भी राइट ट्रायंगल लेते हो उसमें ऑल्टीट्यूड्स क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स तो साइड्स खुद हो जाता है. इसका h1 is 4x, इसका h2 is 3x, एंड इसका h3 ऐसा है. नाउ h1 4 ratio, h2 3 ratio, 4:3. नाउ 60 48 80 में कॉमन मल्टीपल क्या है? I can clearly see this is one is 60, another is 80. This is 23 za, this is 24 za, right? मतलब ये जो 3x है वो 60 है, ये जो 4x है वो 80 है. मतलब साइड से अल्टीट्यूड्स बन गए यहाँ. ये जो छोटा वाला हाइट है वो 48 है, बट उससे मुझे कोई लेना देना नहीं. ट्राइंगल चाहिए तो बेस भी पता है, हाइट भी पता है. तो एरिया इज हाफ इंटू 60 इंटू 80, विच इज नथिंग बट 2400. ठीक है. सी हमेशा एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस है कैट में, जितने भी ज्योमेट्री में स्पेशली 80 to 90% ऑफ द टाइम, 80 to 90% ऑफ द टाइम बोल रहा हूँ, जो दिया हुआ वैल्यूज होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल का होगा. आपको राइट ट्रिपलेट सारे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये क्वेश्चन थोड़ा L2 to L3 के बीच में हो सकता है, या L3 ही मान लो. बट इफ यू नो दैट 60 80 देख के आपको राइट ट्रिपलेट स्ट्राइक हो गए, यू आर सॉर्टेड. यप. कमिंग टू दिस, आई हैव व्हाट, इतनी बड़ी इक्वेशन. सो इक्वल टू 0 दिया है, बट आई कैन ऑल्सो टेक दिस एज f of x is equal to 7x square minus of p plus 13 into x plus p square minus p minus 2, right? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, and he is saying it has two roots which is a and which are a and b, and a and b कहाँ होता है? 0 से लेके 1 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, ये 1 से लेके 2 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है b. So one thing you need to understand, एक तो 0 है, रूट्स आर ऑन द एक्स एक्सिस, एक तो 1 है, एक तो 2 है. Now coefficient of x square is positive 7. That means
मेरा पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला होता है, तो मेरा पैराबोला ऐसा ही होना चाहिए। एंड ये कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस को टच करता है वो रूट्स होता है। अकॉर्डिंग टू दिस गाई मेरा पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक रूट जीरो, एक रूट टू, राइट। ए जीरो को इक्वल हो गए, बी टू को इक्वल हो गए। नहीं तो द रूट्स कुड हैव बीन बिटवीन जीरो एंड वन, वन एंड टू, मतलब मेरा पैराबोला ऐसा भी हो सकता है। मेरा पैराबोला ऐसा हो सकता है। दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से। एक एक्सट्रीम केस में ये लिया, एक जनरल केस में ये लिया। अब क्या, यू हैव थ्री कंडीशन। एक्स इक्वल टू जीरो में मेरा पैराबोला या तो जीरो हो सकता है, या ना ही तो y का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है। y वैल्यू लू, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स जीरो हो तो वाई जीरो हो गए। ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स जीरो हो तो वाई टू या थ्री या कुछ भी, मतलब एक वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। सेम हियर, इस पॉइंट क्या है, टू का जीरो, मतलब एक्स टू हो तो वाई जीरो हो जाता है, नहीं तो एक्स टू हो तो वाई कुछ पॉजिटिव हो जाता है, मतलब एक्स टू हो तो वाई कुछ पॉजिटिव हो जाता है। बट वन मोर थिंग, जब एक्स वन है वाई का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, माइनस टू या माइनस थ्री या कुछ भी, मतलब आई कैन से एट एक्स इक्वल टू वन वाई का वैल्यू नेगेटिव है। सो ये थ्री केसेस आपको दिखना चाहिए, मतलब एक्स जीरो हो तो, एक्स जीरो हो तो पॉजिटिव, एक्स टू हो तो भी पॉजिटिव, वन हो तो नेगेटिव। सो फर्स्ट केस क्या है, जीरो हो तो पॉजिटिव, लेट मी टेक दैट। एफ ऑफ जीरो हो तो जीरो भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो एफ ऑफ जीरो क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो एक्स की जगह जीरो, तो आई विल गेट पी स्क्वायर माइनस पी माइनस टू, पी स्क्वायर माइनस p minus 2 greater than or equal to 0. So if I simplify this, p minus 2 into p plus 1 greater than or equal to 0. That's the only solution, right? Now, the second case kya hai? The second case, let me take f of 2 is greater than or equal to 0. f of 2 is greater than or equal to 0. तो क्या हो जाएगा, 2 रखने से 7 4 सा 28 minus 2p minus 26, right? Plus पी स्क्वायर माइनस पी माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पी स्क्वायर तो होगा ही, माइनस टू पी माइनस पी माइनस थ्री पी, 28 माइनस 26 टू, टू माइनस टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पी इंटू पी माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इज another solution that I got with respect to the second condition. Last condition is वन से, वन में नेगेटिव है, वन में हमेशा वैल्यू पैराबोला का नेगेटिव है, मतलब एफ ऑफ वन हैज टू बी नेगेटिव। एफ ऑफ वन क्या होगा, सेवन माइनस पी माइनस थर्टीन प्लस पी स्क्वायर माइनस पी माइनस टू हैज टू बी नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस टू पी माइनस 20 माइनस सिक्स, सेवन माइनस थर्टीन माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट, है ना, लेस देन जीरो। तो विच इज p minus 4 into p plus 2 has to be less than 0. So now I got three inequalities। तीनों सॉल्यूशंस को मैं सेटिस्फाई करना है। ऐसा सेटिस्फाई करने वाले कितने वैल्यूज होती है वो देखना है मुझे। सो पूरा इनइक्वालिटीज भी हमारा यहाँ रिवीजन होने वाला है, देख लो। सो लेट मी टेक द नंबर लाइन, ठीक है। सो यहाँ इसके हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, माइनस वन एंड टू,
-1 एंड 2, है ना। पॉजिटिव कहाँ का होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब यहां से लेके ये पूरा, यहां से लेके ये पूरा। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इनइक्वालिटी दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स P-0 इंटू P-3, मतलब 0 यहाँ होगा, है ना, 3 यहाँ होगा। और पॉजिटिव कहाँ होता है? 3 के बाद, मतलब सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड इनइक्वालिटी इज दिस, 0 से इक्वल है 0 से कम, ये पूरा। आई वुड टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री। हाँ, इसमें क्या है? -2 से 4 तक, -2 से 4 तक, मतलब नेगेटिव है। 4 के बाद पॉजिटिव, -2 के पीछे भी नेगेटिव और पॉजिटिव, -2 to 4 के बीच में नेगेटिव होगा। सो -2 से लेके 4 तक। बट आई कैन नॉट से एग्जैक्ट -2 को 4 को इक्वल है, क्योंकि इट्स लेस देन, नॉट इक्वल टू। सो यहाँ मुझे ऐसा आएगा, इट कैन नॉट बी इक्वल टू -2 और इट कैन नॉट बी इक्वल टू 4। नाउ तीनों में कॉमन होने वाले इंटीजर वैल्यूज, राइट। यहाँ -2, -1, 0, 1 भी है, 2, 3, 4 भी है, राइट। एक मैं देख पा रहा हूँ विच इज 3 इज कॉमन इंटीजर इन ऑल ऑफ देम, 2 तो सब में कॉमन नहीं है, -1 सब में कॉमन है, राइट। सो दीज आर ओनली इंटीजर्स विच आर कॉमन इन बोथ, ऑल द थ्री, सॉरी। -2 इसमें नहीं है, 0 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और 1 दोनों में नहीं है, तीनों तीसरा में है, बट 2 एक में है, 3 सब में है, 4 ऊपर वाले में नहीं है। So -1 + 3. Answer is, okay. These are the only two integers. So little tough to solve this, but yeah, a lot of concepts get revised. Coming to this, it's about two racers running to and fro. Okay. In the two opposite end, from the two opposite end, okay, from the two opposite endpoints. See, इसमें I would say this 500 is a trap. You don't look at that 500. You clearly observe how these people are moving. एक बंदा का स्पीड 3 यूनिट्स हो तो दूसरा बंदा का स्पीड 7 है। लेट मी टेक द ट्रैक लेंथ एज ओनली 10 मीटर्स। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में क्या होगा? फर्स्ट मीटिंग में दोनों का टाइम सेम है। मीटिंग में पहला बंदा 3 मीटर पर सेकंड, मतलब ये 3 मीटर्स आ पाया तो ये 7 मीटर आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट मीटिंग, M1। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कॉमन सेंस से करते हैं, देख लो। व्हाट विल बी द सेकंड मीटिंग फॉर दिस? सो ये दोनों यहां तक आ गए पहले, they have come up to here। उसके बाद ये बंदा, लेट मी से, और एक 3 यूनिट्स ट्रैवल किया, और एक 3 यूनिट्स ट्रैवल किया। बट व्हाट विल दिस गाय डू, द फास्टर बंदा? फॉर एवरी 3 यूनिट्स स्मॉलर बंदा ट्रेवल्स, फास्टर बंदा गोज फॉर 7 यूनिट्स, है ना। सो दिस गाय विल गो 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स एंड एक्स्ट्रा 1 यूनिट। By the time he will go to the 3 यूनिट्स, राइट। एक्स्ट्रा 1 यूनिट किया होगा, 7 यूनिट्स किया है ना ओवरऑल। बट अभी तक सेकेंड मीटिंग हुआ नहीं। बट जब दिस बंदा, मतलब अभी तक ये कितना यूनिट्स है? 4 यूनिट है ना। नाउ इफ दिस गाय गोज फॉर 1 more 3 units, if this guy go for 1 more 3 units, if this guy goes for 1 more 3 units,
लेट मी से यहां तक. व्हाट वुड दिस फास्टर गाय वुड हैव डन? करंटली हु इज हियर 1 यूनिट के बाद, मतलब 4 यूनिट के बाद, ही विल गो फॉर 7 यूनिट्स. मतलब यहां से जाके, मतलब ऑन द वे एक बार मिला होगा इनको, सेकेंड मीटिंग समवेयर हियर हुआ होगा. यहाँ तक 6 यूनिट्स तो खत्म कर लिया. वापस रिवर्स मार के और 1 यूनिट खत्म करेगा. मतलब यहाँ और एक बार मिलेगा. दिस कुड हैव बीन मीटिंग 2, दिस वुड बी मीटिंग 3. ठीक है. सो जब ये बंदा 3 बार 3 यूनिट जाएगा, पहली 3 यूनिट के बाद मिलेगा, दूसरी 3 यूनिट के बाद, तीसरी 3 यूनिट के बीच में मिलेगा, और वापस यहाँ आएगा. ठीक है. अच्छे से देख लो और एक बार ट्रेजेक्ट्री कैसे हो रहा है. सो दिस हैज हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर 3 यूनिट्स. आफ्टर सेकेंड मीटिंग, आई मीन सेकेंड मीटिंग के लिए ये 3 यूनिट जा रहा है, उतने में ही ये 7 यूनिट जा रहा है. तो यहाँ मीट करके वापस 7 यूनिट में यहाँ आ रहा है थर्ड मीटिंग के लिए. तो फाइनली ये मीटिंग थर्ड हो गया. सो मीटिंग थर्ड यहाँ हो रहा है. सो जब पूरा लेंथ 10 मिनट, आई मीन 10 मीटर होता, 9 मीटर ट्रेवल करने में होता है स्टार्टिंग पॉइंट से. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट. सो नाउ what do I need to understand? The length is 9 out of 10 of 450. Sorry, 9 out of 10 of 500, because total length is 500 दिया हुआ है. So your answer should be 450. मतलब using the common sense you can solve this. Yeah, this is a little tough to comprehend in the actual exam, but yeah, but you can think like this. Coming to this, whoever has felt that modulus is there, so I don't know modulus and left this question, you have done a mistake. You just needed to draw the graph of this and answer comes by itself. You see here, let me take the axis and see how exactly this works. So 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, 1 है, 2 है, 3 है. पहले इसका ड्रॉ करते हैं. x की वैल्यू 0 लिया तो mod 1 प्लस mod ऑफ -1 बिकम 2, 1, 3, 4, so on, right? Gives on going. तो x की वैल्यू 1 रखने से 1 + 1 0, ये भी 2 हो जाता है. x की वैल्यू 2 रखने से 3 + 1 4 हो जाता है. x की वैल्यू 2 रखने से 3 + 1 4 हो जाता है. x की वैल्यू 3 रखने से 4 + 2 6 हो जाता है. मतलब इट कीप्स ऑन गोइंग. यहाँ तो ऐसा जा रहा है. इस तरफ क्या है, -1 रखने से 2 हो रहा है, -2 रखने से 1 3 4 हो जा रहा है. सेम लाइक द अदर साइड. सो ऐसा जा रहा है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट वन. सेकंड का ग्राफ क्या है, y = 4 - 2x. x में 0 रखो तो y 4 हो जाता है, x में 1 रखो तो 2 हो जाता है, x में 2 रखो तो 0 हो जाता है. सो ऐसा जा रहा है ग्राफ. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, -1 रख लो, 4 - 2 इट इज स्टिल 2, एंड x = -2 रख लो, x = -2 रख लो, 0 हो जाएगा. या मतलब इट इज गोइंग लाइक दिस. नाउ this is the graph of y = 4 - 2x. Now I can clearly see this is the intersection part, है ना. उसका एरिया चाहिए. दिस इज एक्चुअली ट्राइंगल, राइट, जिसका बेस कितना है, -1 से 1 तक, तो हाइट कितना है, 2 से लेके 4 तक,
2a, मतलब आई हैव ए ट्राइंगल whose height is 2, whose base is 2. So area is half into base into height. Answer is 2. As simple as that. ग्राफ ड्रा कर पाए तो फटाक से हो जाएगा. I would rate it as L2. Coming to this question, profit based question, profit loss based question, and you can solve this question well only if you can assign the variables well. Okay. So what do I have here? I have sheets, pillows, and curtains. Okay. What is he saying? The end of the year, he earned 40% on the pillows. 40% का फ्रैक्शन क्या है? वाईफाई है ना. मतलब 2/5 प्रॉफिट मिला. सो आई एम अज्यूमिंग पिल्लोस एज 5 का मल्टीपल. पिल्लोस के ऊपर 40% मिला. आई अज्यूम पिल्लोस एज 50x. ठीक है, बिकॉज परसेंटेज में बात हो रहा है. 400x भी अज्यूम कर सकते हो टू मेक योर जॉब इजियर. 50x अज्यूम किया. इसमें 2/5 ऑफ 50x इज 20x, मतलब ये 70x होना चाहिए. ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस. किसके ऊपर? पिलोस के ऊपर. एंड बेडशीट्स में मुझे 25% मिला. ही सेइंग 25% ऑन द बेडशीट्स. सो बेडशीट्स यहां से यहां आने के लिए 25%. 25% का फ्रैक्शन क्या है? 1/4. सो मैं बोलूंगा 1/4 इंक्रीज हुआ है. बेडशीट्स उतने में बेचा है. और क्या बोल रहे हैं? पिल्लोस कॉन्ट्रीब्यूटेड 35% ऑफ द टोटल सेल्स. मतलब पिल्लोस का जो भी वैल्यू है वो 35% ऑफ द सेलिंग प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस. 35% इज इक्वल टू 70x. इसका मतलब क्या है? 1% इज 2x. इसका मतलब क्या है? 100% इज 500x, नहीं 200x. मतलब मेरा पूरा सेलिंग प्राइस 200x हो गया. राइट. और क्या? ये ओके. एंड सेल्स इन रुपीज फ्रॉम बेडशीट्स इज, बेडशीट से जो भी सेल्स है वो 50% मोर देन दैट ऑफ द पिलोस. पिल्लोस का 50% कितना है? 35x. राइट, उतना ज्यादा है तो ये बोल रहा है ये 105x है. ठीक है, यहां से यहां 35x बढ़ा. ठीक है. एंड फ्रॉम द फ्रैक्शनल चेंज मुझे क्या पता है? कोई भी चीज 1/4 इंक्रीज हो रहा है, वापस वही जाने के लिए 1/5 रिड्यूस होना चाहिए, है ना. सो 1/5 रिड्यूस कर लिया तो मतलब यहां से यहां जाते वक्त 1/5 ऑफ 105x विच इज 21x. 21x कम करो तो आई विल गेट 84x. ठीक है. एंड यू सी हियर ये 105x है, ये 70x है, पूरा 175x हो गया. मतलब ये हो जाएगा 25x ताकि ये 200x बने. पूरा 175x हो गया तो 25x. और क्या बोल रहा है? He has earned a total of 20% profit overall. ओवरऑल 20% प्रॉफिट है. मुझे ये नहीं पता है कर्टेन का कॉस्ट प्राइस कितना है. ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 20%. राइट. व्हाट डू वी डू? ओवरऑल प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस. 20% प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 हो तो सेलिंग प्राइस 120 है. राइट. टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 200x, मुझे पता है वो. टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 84 प्लस 50 प्लस एक्स वाई. 84 प्लस 50 कितना है? बाय द वे इसमें x नहीं लिए तो भी चलता क्योंकि पूरा कंपेरेटिव वैल्यू नहीं दिया. सो आई वुड राइट हियर 134x प्लस y इज इक्वल टू 6/5. 2 5 are 2 6 are. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 200 इंटू 5 are
1000x राइट इज इक्वल टू, आई मीन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी, जो इतना कॉम्प्लिकेट करना, 2 3 सा 200 सा, तो उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, 500x इक्वल टू 402x प्लस वाई, तो y इज इक्वल टू कितना बनेगा 98x, मतलब ये हो गया, सॉरी y इज इक्वल टू 98x, 100, ये 3y हो गया, सॉरी इस ऑप्शन था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 43 इंटू 134 इज 402 3y, right? So 98 is equal to 3y, y is equal to 98 by 3. So this will become x behind, this will become 98 by 3x. So I know the cost price, I know the selling price of the curtains. So इन दोनों का रेशियो ले लेते ताकि परसेंटेज प्रॉफिट देख ले, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 25x, कॉस्ट प्राइस कितना है 98x by 3, which would become 75x by x कैंसिल कर लो, 75x कैंसिल कर लो, 75 by 98. I can see that 98 is my cost price, 75 is my selling price. So loss कितना है 23.98 into 100, which would approximately be 23.4 loss. ठीक है, कम पे बेचा है ना. See, whenever you are trying to find out the profit percentage or loss percentage, always try to find out the ratio of selling price and cost price. Aya by Gaya. That makes your job easier in all the profit loss questions. Right? Because of the calculation intensity, this question will go into L3. Yeah. Okay. So let's get to this. Okay. So this question, if you need to solve, you need to have, you need to know all the formulae of area of triangle. There are totally 8 formulae for area of triangle. Okay. In which you need to know that if a triangle has 2 sides and an angle here, I can say area of the triangle is half into a into b into sin theta, right? And ये भी पता होना चाहिए sin 180 minus theta should be equal to sin theta, ये भी पता होना चाहिए, ये दोनों पता होना चाहिए तब जाके क्वेश्चन होगा. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, there is a circular plot, and what did he do, he carved a triangle out of it. There is a triangle, and in the triangle, what is the angle? The angle is 150 degrees, right? If I take this as R and this as R, he is saying the cost per unit flooring of the triangular plot to the rest of the land is 5:3. मतलब इसकी कॉस्ट तो 5 यूनिट है, बचा हुआ को 3 यूनिट है. That's what he's saying, right? So total floor costed 13,900. So what is the area of the triangular part? Triangular part का area is half into r square into sin 150 degrees as per the formula. And sin 150 is nothing but sin 180 minus 30, right? So I can also write this as half into r square into sin 30, which is r square by 2 into sin 30 का value half है तो r square by 4, right? What is the area of the whole circle? Area of the whole circle is pi r square. मुझे
रिमेनिंग का क्या है, इस आई मीन इस सर्किल में से ट्रायंगल को हटा दो, सर्किल में से ट्रायंगल को हटा दो, आई विल गेट 5r² माइनस r²/4, राइट? सो दीज आर द एरियाज। सो इट इम्प्लाइज कॉस्ट क्या हो जाता है, ट्रायंगल को करने के लिए 5 टाइम्स ऑफ, एंड रेस्ट ऑफ द लैंड को करने के लिए 3 टाइम्स, मतलब कॉस्ट का बात करूं, r²/4 इंटू 5x हो जाएगा। इसका कॉस्ट का बात करूं, 5r² माइनस r²/4 इंटू 3x हो जाएगा, right? Now, if I take the ratio of this, is a total value has been given as 13,900. Now, let me take the ratio. r²/4 into 5x upon 5r² minus r²/4 into 3x. x तो cancel, r² भी कॉमन है, तो 5/4 तो होगा ही, डिवाइडेड बाई 22/7 minus 1/4 into 3, right? What would I get? 5/4 into 88 minus 7, 88 minus 7, which is 81 into 3, नीचे 7 into 4, 4 गया, I'll get 35/243. So मैं ट्रायंगल के ऊपर जितना भी कॉस्ट स्पेंड किया वो 35 यूनिट्स हो, तो बचा हुआ एरिया में स्पेंड किया हुआ कॉस्ट 243 है, इतनी यूनिट्स है। पूरा कॉस्ट कितना है, 13,900। मुझे क्या चाहिए, ओनली फॉर द ट्रायंगुलर मैंने कितना स्पेंड किया, मतलब 35 आउट ऑफ 35 प्लस 243 into 13,900. So how much would that be? Let's check in the calculator. So 35 into 13,900 divided by 248, 288, 278. So this would turn out to be exactly 1750, which is option C. That's my answer. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट पता होना इस क्वेश्चन में जरूरी था, एंड देन रेशियोस यूज हुआ है बस। आई वुड से इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट एग्जाम में ये फॉर्मूला स्ट्राइक होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। आई वुड पुट दिस इनटू L3। कमिंग टू दिस, वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस, पेंटर ये है, पेंटर बी है, सो डेज दिया है, तो टोटल वर्क हम अज्यूम करेंगे, मीन देयर इज अ 4 स्टेप मेथड in time and work. Whenever you solve a question, you need to go for total work, second individual efficiency, third effective efficiency, fourth time, right? हमेशा एक चीज ट्रायंगल भी याद में होना चाहिए, WET, where W is the work, E is the efficiency, T is the time. Efficiency is given by work by time is given by work by efficiency, work is given by efficiency into time. अब in this question टोटल वर्क को हम क्या अज्यूम करते हैं, LCM ऑफ द डेज गिवन 12, 16, which is 48। क्या इंडिविजुअल एफिशिएंसी, मतलब ए का एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क हमने 48 अज्यूम किया, टाइम कितना है 12 दिन, 4 यूनिट। बी का एफिशिएंसी क्या है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज 48 हमने अज्यूम किया, वो 16 डेज में इंडिविजुअली खत्म कर सकता है, तो 3 यूनिट्स पर डे विल बी द इफेक्टिव एफिशिएंसी। ये क्या बोल रहा है, ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, राइट? ए वर्क्स ऑन द स्टार्टिंग डे, राइट? पहला दिन ए है, उसके बाद बी है, ए है, बी है, 4 3 4 3, that's how it keeps on going. A B 4
3, राइट? इट कीप्स ऑन गोइंग, 7 यूनिट 7 यूनिट 7 यूनिट, 21 यूनिट्स हो गए। ऐसे भी ए बी, ए बी, ए बी, राइट, ऐसा करते जाओ, विच विल बिकम 4 3, 4 3, 4 3, और एक 21 यूनिट्स हो गए। यहाँ भी 21 यूनिट्स हो गए, पूरा 42 यूनिट्स हो गए, और 6 यूनिट करना है, राइट? ये आएगा 4 यूनिट करेगा, तो 4 यूनिट हो गए। उसके बाद क्या, बी आएगा, 3 यूनिट करेगा, ऐसा नहीं, अभी तक 42 40 मतलब 2 ही यूनिट बचा है, सो बी लास्ट दिन में 2 यूनिट करेगा। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना यूनिट्स काउंट किया, क्वेश्चन ये है कि कितना दिन में काम खत्म हुआ, राइट? कितना दिन में काम खत्म हुआ, यहां मैं 1 2 3 4 5 6 6 दिन, यहाँ भी 6 दिन, यहाँ भी एक पूरा दिन। बट बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट पर डे, बट उन्होंने किया 2 यूनिट ही करना है। सो यहाँ टाइम कितना होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी, वर्क करने के लिए 2 यूनिट है, एफिशिएंसी 3 यूनिट है, मतलब 2/3 डे में ही काम खत्म कर लिया है। सो 6 + 6 + 1 13, 13 2/3, राइट? नहीं नहीं नहीं, कौन कौन आ रहा है, या 13 2/3 वुड बी योर आंसर। बट यहाँ हमने हर एक दिन का लिख के देखा, बट दिस इज नॉट द आइडियल वे टू डू इट। यू कुड हैव रादर डन, एक 2 दिन में ये 7 यूनिट कर रहे हैं ना, वो जॉइंट्स कितना है देखना पड़ेगा आपको। ओवरऑल 48 यूनिट्स है, ऐसे सेवेंस कितना है ताकि वो 48 के पास पहुंचे। तो 7 को 7 से डिवाइड करो, 7 6 42 है ना, 6 यूनिट्स बचता है। मतलब जॉइंट्स, मतलब सेवेंस 6 चाहिए 48 तक, 48 तक जाने, एक 7 के लिए 2 दिन लगेगा। सो 6 7 के लिए 6 × 2 12 डेज लगेगा। 12 डेज काम करने के बाद 42 यूनिट्स खत्म हो गए, तो बचा हुआ 6 यूनिट्स करने के लिए कितना दिन लगेगा देखना पड़ेगा। और एक दिन में ये आता है, इन 6 यूनिट में से 4 यूनिट खत्म कर लेता है, 2 बच जाता है। बट ये 2 करने के लिए बी आएगा, वो 2/3 डे में ही काम खत्म करेगा, तो और 2/3 डे ऐड होगा, द आंसर विल बी 13 2/3। ठीक है, सपोज किसी ने ऐसा सोचा कि 4 + 3, सर 7 यूनिट्स काम खत्म होने के लिए 2 दिन लग रहा है, पूरा 48 यूनिट्स काम खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा। ऐसा करके कर लो, x = 96/7, विच विल बिकम 7 1 7, 2 7 3 21, 13 5/7 days, बट वो ऑप्शन में ही नहीं होगा। ये प्रोसीजर ही गलत हो जाता है, क्योंकि व्हेन यू आर टेकिंग 7 यूनिट्स 2 दिन में हो रहा है, इसका मतलब 1 डे में 3.5 यूनिट्स हो रहा है, बट 1 डे में 3.5 यूनिट्स आपने गलत अजम्पशन ले लिया। So the best way to solve alternate based questions is only through division method. This is how you are supposed to do. ठीक है, so this will be between L1 and L2. You should have done this. Yeah. Coming to this question, a pure language based question, shouldn't have taken much time after reading the question. He's saying there are totally 13 teachers in total. ठीक है, for everybody graduate, they at least graduate, they are all graduates. Graduates तो सब लोग है ही। अब क्या है, some teachers have master degree and some teachers have completed batch B.Ed, ठीक है, बैच B.Ed डिग्री इन एडिशन टू बैचलर्स डिग्री। बैचलर डिग्री तो सबके पास है ना, बैचलर डिग्री ग्रेजुएटेड मतलब बैचलर डिग्री तो सबके पास है, सबके पास मास्टर डिग्री भी है, सबके पास बैचलर्स डिग्री भी है, बैचलर्स इन एजुकेशन डिग्री भी है। मतलब जो टीचर बोथ मास्टर्स भी की और
बैचलर्स डिग्री भी, बैचलर्स इन एजुकेशन डिग्री भी की, शी आर हियर इज एलिजिबल फॉर हेडमास्टर। ये क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली 3 टीचर्स है ओनली बैचलर्स डिग्री, मतलब इसमें से 3 गया तो मतलब ओनली बैचलर डिग्री वाले 3 गया, मतलब बचेगा 10। मतलब ये 10 लोग में कुछ लोग ओनली मास्टर डिग्री हो सकता है, कुछ लोग ओनली बैचलर डिग्री हो, बैचलर इन एजुकेशन डिग्री हो सकता है, कुछ लोग दोनों हो सकता है, राइट? नाउ हियर वी कैन फॉर्म ए वेन डायग्राम। ठीक है, किस किस के लिए? मास्टर्स डिग्री के लिए और बैचलर्स इन एजुकेशन डिग्री के लिए, बीएड। नाउ ये पूरा 10 लोग है। ये क्या बोल रहा है? 7 टीचर्स हैव कंप्लीटेड बीएड, ये 7 लोग है। 5 टीचर्स हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री। नाउ ये जो पोर्शन है वो हेडमास्टर बन सकता है। सो इसको मैं एक्स मान लू, राइट? ये हो जाएगा क्या? 7 - x, है ना? पूरा 7 है, ये पूरा 5 है, ये 7 - x है। 5 + 7 - x is equal to 10. So x would become 12 - 10, which is 2. And there are only 2 people who can become headmaster. It's easy question, but question लेंथ देख के आप छोड़ दिया तो आपकी गलती है. This question could have been also done in this way. N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. N of A union B में 10 रखना पड़ेगा, N of A में 7 रखना पड़ेगा, यहाँ 5 रखना पड़ेगा, AX पहचानना पड़ेगा. X equal to, you could have done this way. Yep. Coming to this typical average question. So average of a family decreased by 3 years when 34-year-old member passed away. So if I take the total sum of the ages of the family members, sum is basically given by average. Average is sum by n, average into n, where n is the total number of people, right? Now क्या हो गया? एक 34-year-old बंदा मर गया, तो सम में से 34 एज गया, सम में से 34 एज गया, एवरेज क्या हो गया? 3 साल डिक्रीज हो गया, राइट? सो A - 3, राइट? नंबर ऑफ पीपल कितना डिक्रीज हो गया? N - 1. दिस इज वन इक्वेशन. और क्या है दूसरी केस में? इफ ए न्यू बेबी हैज बॉर्न, मतलब सम क्या हो गया? +0. बट वो बंदा मरा नहीं, वो बंदा 34 पर है अभी, तो एवरेज को क्या हो गया? 5 डिक्रीज हो गया, बट एक बंदा नया पैदा हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल N+1. इन तीनों इक्वेशन में से मुझे ये पहचानना है. फाइंड द इनिशियल एवरेज ऑफ द फैमिली, मतलब ये पहचान. तो सम की जगह an रख लेते हैं. ये क्या हो जाता है? an is equal to, I mean an - 34 is equal to an minus a, an minus a minus 3n plus 3, right? an cancel, right? So मुझे मिल जाता है from if this is the first equation, फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से a + 3n is equal to 34 + 3, 37. ये क्या बन जाता है? सम की जगह an + 0 is equal to an plus a minus 5n minus 5, है ना? तो आई कैन गेट, इफ दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की जगह a - 5n is equal to 5 हो जाता है. मुझे ये पहचानना है, बट n पहचानना इजी लग रहा है मुझे. माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं. 8n is equal to 32, n is equal to 4, 4 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो. a plus 12 is equal to 37,
So A is equal to 25. That would become the average age of the family members initially. ठीक है, सिंपल टू इक्वेशंस बनाना है, थ्री इक्वेशंस बनाना है. यू आर सॉर्टेड इन दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन डन. दिस वुड गो इनटू L1 and L2 के बीच में. Coming to this pretty solid question. ठीक है, he has given a range between 1 to 90. Before that, if I just draw the number line and decide what exactly is the behavior of the number line, right? I have what? कहां से कहां तक? यहाँ 10 है, बाद में 14 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 22, राइट? यहाँ एंड में लेट मी राइट थोड़ा और 10, 14, 18, 22, उसके बाद भी है 26 है ना, +4 जा रहा है ऐसा जाके जाके यहाँ 98, 94, 90, 86 ऐसा है. But I am interested from 1 to 90. But before that, let's check what exactly is happening. We know that these are all the critical points of this expression. सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव ले, इसको नेगेटिव ले, इसको पॉजिटिव ले, इसको नेगेटिव ले. एग्जैक्टली यहाँ पॉजिटिव होगा. नाउ वी डोंट नो वेदर 10 की पीछे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. यहां से मुझे पता है, राइट? You see here, if I consider only 3 points, if I consider only 3 points, I'll get plus minus, right? If I consider 2 points, I get plus minus. मतलब ऑड नंबर ऑफ पॉइंट कंसिडर किया तो नेगेटिव आएगा बगल में, इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसिडर किया तो पॉजिटिव आएगा बगल में, ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसिडर किया तो नेगेटिव आएगा बगल में, राइट? उस थॉट प्रोसेस से देखना है 10 से लेके 98 तक आपके पास ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स है या इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स है. ऑड हो तो इसके बगल में नेगेटिव आएगा, इवन हो तो इसके बगल में पॉजिटिव आएगा. सो लेट्स चेक. दिस इज इन एपी. Pn is equal to a plus n minus 1 into d. So nth term is 98, a की जगह 10, n minus 1 into d की जगह 4. So n हो जाएगा 88 by 4, 22, 23. मतलब I see that there are odd number of terms, right? Odd number of terms ही है. मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कंसिडर किया तो नेगेटिव, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कंसिडर नेगेटिव. मतलब यहाँ तक टोटल ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वापस नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव. इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दैट. अब क्वेश्चन क्या है? 1 से लेके 90 के बीच में नेगेटिव्स कहाँ कहाँ है, राइट? एक तो पक्का है, यहाँ 1 ले लिया मैंने, ये पूरा नेगेटिव है. 1 से लेके 9 तक तो सारा नेगेटिव ही है, सारे इंटीजर वैल्यूज. मतलब 1 to 9 तो है, टोटली 9 वैल्यूज वहां तो है. बट उसके अलावा मुझे नेगेटिव यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है. मतलब 14 से चालू करके 94 तक है. मतलब 14 के बाद 3 पॉइंट्स है, 15, 16, 17. 22 के बाद 3 पॉइंट्स है, 23, 24, 25. 94 के बाद भी 3 पॉइंट्स है. मतलब 14 से लेकर 94 तक कितने वैल्यूज ऐसा है उसके बाद नेगेटिव है, मैंने चेक कर लिया. उसका इंटू 3 करने से टोटल नेगेटिव वैल्यूज मुझे मिलेंगे. मतलब पहला 14 है, उसके बाद कौन सा नंबर है जिसके बाद नेगेटिव है? 22 है, राइट? ये भी एपी में जाएगा, +8 ऐसा. सो 22 + 8 अगेन 30. व्हाट वाज द लास्ट नंबर? यहाँ 86 भी है, उसके बाद 94 भी है, तो +8 में जा रहा है. सो अगेन आई यूज द सेम फॉर्मूला. 94 is equal to a plus
n minus 1 into d is 8. 94 minus 14 is 80. 80 is equal to n minus 1 into 8, which would become 11, right? 94 is equal to 10. 80. 80 by 8, 10, 11. 11 is equal to n, right? Have we done it right? Okay. The problem is I should not consider 94 क्योंकि 1 to 90 तक की है, मतलब ये कंसिडर नहीं कर सकते 90 तक की रेंज, तो 86 is the last number. So what would this become? 1 to 90 तक की रेंज, तो यहाँ 86 is the last number. So 86 minus 4 is 72. 72 is equal to n minus 1 into 8. 8 ones are 8 nines are, so 10 is equal to n. मतलब there are totally 10 points जिसके बाद नेगेटिव नंबर से, मतलब हर एक पॉइंट के बाद 3 नंबर से 15, 16, 17, 23, 24, 25, 87, 88, 89, मतलब हर एक पॉइंट के बाद 3 है. सो यहाँ मुझे 9 ऑलरेडी मिला है, यहाँ 10 है, सो 10 into 3, तो टोटली 39 वैल्यूज है जिसमें ये नेगेटिव है. सो इनइक्वालिटीज प्लस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट. ठीक है, आई वुड से दिस इज L3 बिकॉज वी माइट मिस आउट ऑन एनी वन नंबर, राइट? बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू लर्न द कॉन्सेप्ट. Coming to this question, we have what 3 distinct integers, मतलब 2 से लेके 10 के बीच में. My integers are from 2 to 10. ठीक है, इंक्लूसिव भी है, मतलब 2 10 भी हो सकता है. एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ए बी बी सी ए में एक ऑड है, एक ऑड है, बाकी दोनों इवन है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक ही ऑड है, बाकी दोनों इवन है. मतलब सपोज ऐसे 2 2 5 ऐसा लिया होता, 2 3 5 लिया होता फॉर एग्जाम्पल, 2 4 5 लिया होता, 2 4 8 है, 2 5 10 है, 4 5 20, सारे इवन आ रहे हैं. मतलब मेरा नंबर में 2 इवन एक ऑड तो नहीं हो सकता. तीनों इवन हो तो सारे इवन होते हैं वापस प्रोडक्ट. मतलब 2 इवन एक ऑड भी नहीं हो सकता है, तीनों इवन भी नहीं हो सकता है. मतलब एक इवन 2 ऑड हो तो 5 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, एक नंबर ऑड आया है. मतलब इतना तो पता चल जाता है from the first statement that I should should have one even and two odd, one even number, 2 odd number. बट मुझे ये नहीं पता एबीसी में कौन सा इवन है कौन सा ऑड है. उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ एबीसी इज 4 का मल्टीपल. ये 4 का मल्टीपल है बोल रहा है, मतलब 2 ऑड नंबर्स है, एक इवन नंबर्स है. ये 4 किसकी वजह से आया होगा? वो इवन नंबर की वजह से आया होगा. मतलब जो भी इवन नंबर है वो 4 की मल्टीपल दे रहा है, मतलब वो इवन नंबर या तो 4 हो सकता है ना तो 8 हो सकता है, अमॉन्ग दिस 2 to 10, राइट? तब जाके वो 4 का मल्टीपल दे पा रहा है. और उसके बाद क्या बोल रहा है? अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज एन इंटीजर. मतलब ए प्लस बी बाई 2 शुड बी इंटीजर. इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी शुड बी इवन नंबर, तब जाके 2 से डिवाइड करने से इंटीजर मिलेगा. ए प्लस बी ऑड तो नहीं हो सकता. मतलब 2 ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है. जब कब होगा सम ऑफ द नंबर्स इवन? जब दोनों ऑड होते हैं, जैसे कि 3 + 5 ऑड, तब जाके इवन बनेगा. मैं 3 + 2 करूं या 3 + 4 करूं 7 होगा, 3 + 8 करूं 11 होगा, तो इंटीजर नहीं बनेगा. इनडायरेक्टली ही इज सेइंग दैट द ऑड नंबर्स आर a, b, c इज माय इवन नंबर. मतलब c या तो 4 हो सकता है
ना तो 8 हो सकता है। और क्या बोल रहा है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए कामा बी कामा सी इज ऑल्सो इंटीजर। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 is again integer. Indirectly is trying to tell me that a plus b plus c is 3 का multiple, मतलब वो 3 से divisible होना चाहिए। Now you see a plus b plus c should be divisible by 3, मतलब a plus b plus c 4 या a plus b plus 8, ये दोनों 3 से डिविजिबल होना है। मतलब 3 से डिविजिबल होना है तो a प्लस बी क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, तो होगा। उसके बाद 5 हो सकता है, उसके बाद 8 हो सकता है, 8 प्लस 4 12, 11, मतलब 3 3 3 बढ़ता जाएगा, 14 17, राइट। उसके ऊपर मत जाओ क्योंकि मैक्सिमम इज 19, 2 डिजिट्स का सम 10 प्लस 9। यहाँ क्या हो सकता है? ए प्लस बी 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 13 हो सकता है, 16 हो सकता है, 19 हो सकता है। उसके ऊपर मत जाओ। नाउ यू लुक एट वन थिंग, ए एंड बी आर ऑड, उन दोनों का सम क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। मतलब ये ऑड तो नहीं हो सकता, ए प्लस बी ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता है, बट ए प्लस बी यहाँ ऑड है, तो यहाँ भी ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, ए भी हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। अब इस इसमें देखना है, ए प्लस बी 2 कब हो सकता है? 1 1 होने से, दैट्स द ओनली वे। 2 to 10 में से यूज करना है, बट दे आर डिस्टिंक्ट, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 8 कैसे बन सकता है? दो ऑड नंबर्स की वजह से, दोनों ऑड, मतलब 3 + 5 ले सकता हूँ। ही सेइंग अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब आई कैन से 3 5 and 4 और 5 3 and 4, इट डजंट मैटर, ऑल आर सेम। सो इससे मुझे एक मिल गया। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी? 4 4 2 6 1 7, 1 7 नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 2 to 10 तक ही है, 1 नहीं ले सकता हूँ। सो 3 and 5 इज द ओनली वे। ये कैसे फॉर्म हो सकता है? 14 5 + 9, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सो यहाँ एक मिल गया, यहाँ एक मिल गया। नाउ कमिंग टू 4, 4 से कुछ मिलता है? 1 3 नहीं, 1 यूज नहीं कर सकते, 2 2 नहीं, 4 से कुछ नहीं। 10 का क्या है? 1 9 9 2 8 9, आई मीन 3 7, या 3 और 7, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आई कैन नॉट टेक 7 3 अगेन, 4 6 भी नहीं, 5 5 भी नहीं, 2 डिस्टिंक्ट होना चाहिए। सो इसमें क्या है? 7 एंड 9, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी? 3 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, नहीं। सो यहाँ मुझे 2 मिला, यहाँ मुझे 2 मिला। सो टोटली देर आर 4 अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, 1 2 3 4। सी तो 4 पक्का यहाँ, सी तो 8 पक्का यहाँ, ठीक है। सो दिस इज डेफिनेटली L3। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट इन द एक्चुअल एग्जाम, एंड this is how the solutions are. So look at the score versus percentile. Okay, this is a very tough paper. If you are scoring anywhere around 11 marks also, you are crossing the sectional cutoff of many of the IIMs. If you are going up to 14, that's decent here. Even if you are getting at 9 marks, if this is your super mock one, you are getting 9 marks, you are at a good pace. And these 4 questions are those 4 questions which you should have definitely attempted in this paper, right? 5 9 11 8 questions, you can go and check them. This is how the segregation is. Hope you learned new things. And there is a Google form that has been uh, uploaded below this link in the PDF. So ensure you give the review of the video solutions that you have got. Thank you.